बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो जी माशाल्लाह मैं अभी घर से आया था तो मैंने बोला चलो आज कायद आज़म की जो ये पिक्चर है इसके पास से आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं माशाल्लाह। और अभी सुबह 9 बजे का टाइम हो रहा हुआ है और मैं यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह आज धूप भी 4 दिन के बाद आज देखने को मिली है और आज जुमेरात है और आज धूप निकली है जाके। संडे वाले दिन से धूप गायब हो गई है क्योंकि संडे से बारिशें हो रही हैं इस्लामाबाद में, तो आज जाके माशाल्लाह धूप निकल पाई है। तो अभी मैं जा रहा था ऑफ़िस जाके कुछ आज बाइक के काम करने हैं। कोई काम तो है नहीं ऑफ़िस में क्योंकि सीज़न ऐसा चल रहा है। फिर उसके बाद अभी ऑफ़िस चलते हैं, ऑफ़िस जाके जो अपने बाइक के कुछ काम करने हैं वो भी करते हैं और साथ आपको बताते हैं कि क्या क्या करने वाला और क्या करना है बाइक का। तो इसी के साथ फिर अभी मैं चलता हूँ ऑफ़िस। और कि माशाल्लाह आपने व्यू देखा होगा माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये देखें अभी ये सारे माशाल्लाह घर इतने प्यारे प्यारे हैं ना। और ये माशाल्लाह कायद आज़म की पिक्चर भी बहुत प्यारी लगती है। और ये इस साइड को मेन इस्लामाबाद और फैसल मस्जिद सेंटोरस सारी जो है बादलों के साथ छुपे हुए हैं और पहाड़ भी छुप गए हुए हैं हद से ज़्यादा। और माशाल्लाह वैसे धूप निकली और अभी काफ़ी प्यारा मौसम हुआ हुआ अभी। और अभी चलते हैं ऑफ़िस, फिर ऑफ़िस जाके आप लोगों से मुलाकात होती है। ऑफ़िस आ चुका हुआ हूँ तो अभी जो बाइक के काम करने हैं वो भी और लड़कों के साथ मोटर लगाई हुई है तो मोटर के साथ हल्का फुल्का जो है बाइक को भी पानी मारता हूँ। और आज इसके जो काम करने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला काम तो ये स्टैंड वाला है, डबल स्टैंड, क्योंकि ये जो है ये इस तरह डिस्को डांस करता होता है। और दूसरा ये किक पहले भी टूटी हुई थी तो मैंने वेल्डिंग की हुई है यहाँ से। इसको थोड़ा सही करना क्योंकि इससे पाँव स्लिप करता है और पाँव बहुत बुरे तरीके से लगता है। और दूसरा इसका जो एयर फिल्टर वाला लोटा होता है वो भी मैं नया लेके आया हूँ, वो भी डालना है। वो डाल के चेंज करते हैं। अभी खोलते हैं इस बाइक को सारा, फिर वेल्डिंग शेल्डिंग भी करनी है नीचे से सारा सलेंसर डबल स्टैंड सब कुछ खोलना पड़ेगा। खोल के वो करते हैं फिर ज़बरदस्त करके वो भी आप लोगों को दिखाएंगे हम कैसे रिपेयरिंग करते हैं। R to Z इसको मैं खोलूँगा बाइक को, फिर करेंगे रिपेयरिंग।
ये अपने रकम भी लगा दीजिए। इधर आके बैठ जाओ, क्योंकि वहाँ ना जाए। Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you playing up on that porch. Now can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on the tractor, lean all in my blood. Cheated on my baby, you can go and ask. My life is a movie, boy riding in booties. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. Can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. Can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more, 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 no Don't take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm
जी फाइनली अभी हमारा स्टैंड वेल्ड हो चुका हुआ, बस इसको भी उतारते हैं, साफ़ करके इसको पेंट मारना है। मुझे अभी लगा के सिर्फ मैंने चेक किया था फिक्स करके कि बैठ रहा है सही, तो अभी माशाल्लाह बाइक जो है सही खड़ी हो रही है। पहले की निस्बत ये एक साइड को जो गिरती थी ना, वो नहीं अभी हो रहा काम। ये जो ज़्यादा एक साइड को गिर जाती थी उससे थोड़ी सी बचत होगी। अभी इसको पेंट करते हैं, तो पेंट करके सुखा के फिर इसको लगाते हैं। तब तक और जो चीज़ें चेंज करने वाली हैं वो भी कर लेते Riding on the tractor, lean all in my blood. Cheated on my baby, you can go and ask me. My life is a movie, boy riding in booties. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. Can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. Take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more, 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 no more. लग चुका हुआ स्टैंड के ऊपर अभी खड़ी है, तो अभी इसका ये लोटा चेंज करना था और ये सारा इसका एरिया टूट चुका हुआ था, क्रैक हो गया। तो अभी सबसे मुश्किल है इसको निकालना, बड़ी मुश्किल से बाहर आता है। बस उसका फिल्टर बीच में टूट जाता होता है निकालते, पर हमें एहतियात से निकालना, क्योंकि फ़िल्टर जो है हमारा सही निकालना होगा। बस इतनी सी बात। इसको भी खोल के नेम वाला डाल के इसको वापस फिट करते हैं। कार्बोरेटर भी मैंने अभी खोला हुआ था सारा, इसी सारे की सेटिंग की, वो अंदर से गंद से भरा हुआ था क्योंकि बाइक मिसिंग बहुत ज़्यादा कर रहा था, इस वजह से मैंने खोला हुआ था। अभी ये नया वाला आ गया, इसके अंदर फिल्टर डालेंगे स्पून से। अभी हमारी बाइक बिल्कुल ओके हो गई है। बस अभी जो कार्बोरेटर खोला हुआ था उसके फ्यूल की जो है वो एडजस्टमेंट करनी है इन दो नटों से। तो जी माशाल्लाह अभी बाइक की एडजस्टमेंट भी हो गई है सही, और अभी बस इसको जो है ट्राई लेके अभी चेक करते हैं। उसके बाद इसमें मैंने जो है ना नीचे वो डीजल भी गिरा हुआ नज़र आ रहा होगा, वो सलेंसर भी मैंने डाला था कि सलेंसर में जो जंग वगैरह लग जाती है ना इसकी, वो बांसुरियों को, तो उससे साउंड ख़राब हो जाता है। तो वो मैंने इसमें से डाला था कि वो भी साफ़ हो जाए साथ ही। तो अभी इसी के साथ सामान को भी ट्राई लेके क्लोज़ करते हैं साथ साथ। The next day later. तो जी माशाल्लाह कल जैसे आपने देखा कि मैंने बाइक अपना सारा खोला हुआ था, सारा उसका काम करने के बाद तकरीबन 4-1 बजे मैं फ्री हो गया था। फिर उसके बाद ऊपर बॉस भी आगे हुए थे, वीडियो में ही शायद आपको नज़र आया होगा। तो उस दौरान फिर बॉस आ गए, वो बाइक का काम शाम करने के बाद दूसरा बाइक था यूनाइटेड, उसको भी साथ करना था, उसका भी इंजन ऑयल वगैरह चेंज किया, फ़िल्टर उसका एयर फ़िल्टर चेंज करना था, कार्बोरेटर साफ़ करना था, वो किया।
वो भी करके फिर मैं आ गया था ऊपर बॉस के पास। तो वहाँ पे कुछ काम के मतलब डिटेल्स बनानी थी, क्या क्या काम करने वाले थे। तो फिर व्लॉग नहीं बना सका, ना ही कल व्लॉग का एंड कर सका क्योंकि रात को 8 बज गए थे। इसी तरह ऑफिस में छोटे मोटे जो काम थे वो करते रहे। फिर उसके बाद मैं घर चला गया और आज माशाल्लाह जुम्मा, और जुम्मे का भी आज सारा दिन गुजर गया और मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। और अभी असर के टाइम में जाके व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि आपको ये सूरज से आइडिया हो रहा होगा क्योंकि मेरे बिल्कुल चेहरे पे लग रहा हुआ है। तो फिर आज इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।